Hello friends, I'm Reena Mahajan. Welcome again to English Oasis. Today I'm going to tell you how to solve a comprehension. You've always been facing comprehensions right from your childhood when you were in class 1 or class 2 and till the last exam you will give, may it be some entrance exam, may it be something else, but whatever exam you give regarding English, obviously English comprehensions would be a part of it. So I'm going to give you some very practical tips. I have an experience of about 30 years in teaching. So I can provide you those tips which I don't think any other teacher would ever give you. Number 1, how to solve these comprehensions properly. Do not read the whole passage. Yes, you heard it right. Everybody says, read the whole passage, read the whole passage. I say, don't read the whole passage. No way. Why waste time in reading the whole passage? In fact, read the questions first. Do you get my point? Come to question number 1. Read that out. Read out all the questions first of all. So you know what you have to fetch out in that passage. हमें उस passage को या उस comprehension को पढ़ के उसमें PhD नहीं करनी है. हमें तो सिर्फ उसमें से वो क्वेश्चंस फिल्टर आउट करके निकालने हैं, उनके आंसर्स निकालने हैं. दैट्स ऑल. सो रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द सेकंड क्वेश्चन, go back to the comprehension in the very first paragraph, in the very second paragraph. Try to fetch the answers there itself. Usually सारे comprehensions में sequential ही आपको मिलेंगे. जितने भी क्वेश्चंस होंगे, यानी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में आंसर मिलेगा और थर्ड फोर्थ का आगे चलते जाएं तो थर्ड फोर्थ पैराग्राफ में मिलेगा. बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा दैट यू विल हैव टू फेच क्वेश्चंस आंसर लास्ट वाले पैराग्राफ में फर्स्ट आंसर हो. ऐसा रेयरेस्ट केस होता है, बट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. कीप अ eye to that also, right? Second, what sort of questions will be asked? The very first type of questions would be very straightforward answers. यहाँ से यहाँ तक का first answer, यहाँ से यहाँ तक का एक दो आपको comprehension में ऐसे भी मिल जाएंगे, right? But what you have to do is, जब भी आप question read करते हैं उसमें से keywords ढूंढिए. There must be a question which is related to the years, year 1990, year 1996, 2022. Clear? So go back to the passage and try to fetch those keywords कहाँ मिल रहे हैं आपको. Right? So wherever those keywords are located, there is your answer. Somewhere near that, fetch it out. Second type of questions can be the vocabulary questions. Vocabulary is find the words which mean the same as, find the words which mean the opposite as, right? So for that, the tip is if the para number is given to you, अगर आपको paragraph number given है तो, which happens usually till 12th standard in all the exams, may it be the board exams, you are always provided the paragraph number from which you have to find out that word. Clear? So go through that para, read the word, come back to the paragraph again and mark 3, 4, 5 words जो आपको लग रहा है कि ये हो सकते हैं. उसके बाद उन में से सिलेक्ट करिए, उन पूरी लाइंस को हिंदी में ट्रांसलेट करिए. देखिए कि आपका वो वाला वर्ड, उसका कंटेक्स्ट किस वर्ड के साथ सूट कर रहा है. जो क्वेश्चन वर्ड है उसका कंटेक्स्ट किस वर्ड के साथ सूटेबल है. जस्ट गो फॉर दैट एंड दैट वुड बी द वर्ड. Number 3, there can be tricky questions which ask for your opinion. आप क्या कहते हैं? What according to you? What is your opinion about it? Share your own opinion. Number 1, you would always go with what the author says, what the paragraph says. अगर पैराग्राफ में एक व्यू पॉइंट चल रहा है तो हम उसी व्यू पॉइंट को yes बोलेंगे. हाँ, बहुत सही व्यू पॉइंट है and I agree with this बिकॉज में हमें ऊपर के पैराग्राफ में से बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो हम थोड़ा थोड़ा लिख के भी अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं. सेकेंडली, ऑलवेज गो विद द मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज. अगर आपका ओपिनियन पूछा गया है तो हम बहुत ही वैल्यूज से भरे हुए लोग हैं.
और हम बिल्कुल सही सही आंसर वैसा देते हैं जो कि वैल्यू से या एथिक्स या नॉर्म्स या मॉरल एथिक्स के साथ रिलेट होता है, जो उनके साथ बिल्कुल सही फिट बैठता है, वैसा आंसर फ्रेम करना है आपको. नेक्स्ट, there can be MCQ questions also which are very very confusing. MCQs देख के हमें सांस आ जाती है, वाह बहुत अच्छा, 4 आंसर दिए हैं, एक को टिक करना है, बट they are the worst questions ever. क्यों? क्योंकि चारों ही आंसर्स आपको ठीक लगते हैं ना. तो उसका ट्रिक क्या है कि आप पैसेज के हिसाब से देखिए और उसके बाद उसमें से नॉक आउट करिए द रॉन्ग वंस. And whatever is left, maybe there are two, just try to make a choice between them according to the passage. Here is where you have to go through the passage. And there can be some questions which ask for the title. तो title हमेशा first और middle का paragraph और last का paragraph पढ़ने के बाद या उसका हल्का सा ओवरव्यू लेने के बाद ही डिसाइड करना. ऐसे नहीं हो कि टाइटल आप वेरी फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 4 लाइनों में से कुछ भी रिड्यूस कर दें एंड द लेटर इट टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ द होल कॉम्प्रिहेंशन टॉक्स अबाउट मॉडर्न सर्जरी एंड इट्स वेज एंड वो, और हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो किसी एक सर्जरी के बारे में बात करें, नीचे वो और डिफरेंट कंट्रीज की सर्जरीज के बारे में बात करें. तो आपने अगर टाइटल दे दिया surgeries, contemporary surgeries in India, so that would be wrong. In the world देना पड़ेगा आपको अगर वो लास्ट के पैराग्राफ्स में. So just go through the first paragraph, the middle of the whole comprehension and the ending of the comprehension. Just take an overview and then write the title. So best of luck for your exam. Friends, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो please like it and subscribe to my channel so that all the latest videos reach you in time. Thank you.